Good evening, students. In previous video, we have studied in your class 9 the functions of plants and animals, and we have also discussed the important different types of categories of plants and animals. In plants, we have seen that there is a bryophyta, pteridophyta, and gymnosperm and angiosperm also on the basis of their seed structures, on the basis of their cotyledons and monocot and dicot also. So we have completed the plant portion in previous video. Now today we are going to discuss the most important part of animals kingdom. We know that there is a several types of animals are surviving all over the world. Okay, now all the animals have survived, but their phylum should be concluded in the classification by which no one can get confused to identify them properly. Okay, so approximately scientist has given the most 9 to 10 phylum on the basis of their structure, on the basis of their habitat, on the basis of their body designing features. Okay, so आज हम इस phylum में जो भी देखेंगे उसमें हम types of organisms के बारे में देखेंगे और that type of organisms are living where, कहाँ रहते हैं वो, and which type of body differentiations found on that. ठीक है, so let's start from the first phylum is that, and that is Porifera. Okay, Porifera, generally Porifera means, Porifera is a word which is related to pores. Okay, Porifera means pores, and pores means small holes which are found all over the body. Porifera का मतलब holes से related है, और holes जो होते हैं वो generally बहुत सारे ऑर्गेनिज के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे. बट जिस ऑर्गेनिज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जनरली दैट ऑर्गेनिज आर कंसीडर्ड इन द पॉरीफेरस. पॉरीफेरस के ग्रुप में बिलोंग करते हैं. बट फर्स्टली स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट आई वांट टू टेल यू दैट पॉरीफेरा मींस होल्स. होल्स मतलब जो छोटे मोटे छेद होते हैं उनके बॉडी पोर्स के ऊपर जो कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड पोरीफेरस. एंड सेकंड, दीज आर नॉन मोटाइल्स एनिमल्स. नॉन मोटाइल्स मींस दे आर अनेबल टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नॉन मोटाइल मतलब इनमें मोशंस नहीं होती हैं, ये एक जगह पे स्टेबल्स होते हैं, बट दे रिक्वायर्ड अ सॉलिड सपोर्ट. लेकिन इनको सपोर्ट की जरूरत होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू फॉलो इट. एंड नाउ दे हैव holes and pores all over the body. As I already told you that on their body surface there is a cavity, and on the cavity there is a small holes and pores are also available, and this type of animals are considered and poriferous animals. Okay, now next, they have well developed canal system. Canal system means we know that in several type of organisms canal systems are available. Okay, now what is the function of canal system? Generally canal systems are do different types of functions to regulating the water functions, to regulating the blood circulation, to regulating the food particles inside the organs. Okay, जो भी कैनाल सिस्टम्स होते हैं आपके जो भी ऑर्गेनिज्म के, उनके अंदर कैनाल सिस्टम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टू सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी. पूरा जो वाटर होता है उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना. ओके, नाउ आफ्टर द सर्कुलेटिंग देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इज अवेलेबल. व्हाट इज दैट? टू ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन. फूड को और ऑक्सीजन को कैरी करते हैं इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन के कारण, बाय विच द पॉरीफेरस गेट प्रॉपर न्यूट्रिएशन, प्रॉपर ऑक्सीजन एंड प्रॉपर फूड एंड प्रॉपर वाटर टू लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम. यही सारे कारण पॉरीफेरस एनिमल्स को काफी समय तक स्टेबल बनाते हैं और काफी दिनों तक जिंदा रहने में उनकी मदद करते हैं. ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट दे आर covered with hard skeleton. Okay, they are generally covered with hard skeleton means their body is comparatively covered with different types of layers, and these layers are provide protecting layer to the poriferans. That's why here I have written that their body is covered with a hard skeleton. Okay, hard skeleton मतलब बहुत hard skeleton से उनकी body जो है compact होती है, survived होती है पूरी तरीके से, which can neither be डिस्ट्रॉय इजीली. ओके, जिसको हम इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, मिनिमम डिफरेंशिएशंस बॉडी. उनकी जो बॉडी होती है दे आर नॉट हाईली डिफरेंशिएटेड इनटू द होल सेक्शन. ठीक है, उनके बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है वो ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, ज्यादा बॉडी पार्ट्स उनके डेवलप नहीं होते हैं, वो बहुत ही कम लो लेवल में होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस. जनरली अगर हम बात करते हैं तो पॉरीफेरस ऑर्गेनिज्म आर जनरली कॉल्ड स्पॉन्जेस. उनको हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर इन अ सॉफ्ट नेचर. क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं, दैट्स व्हाई द पॉरीफेरस आर कॉल्ड स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस वी ऑलरेडी नो दैट द सॉफ्ट पार्टिकल्स एंड सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म आल्सो. ओके, नाउ नेक्स्ट,
found in marine habitat. Marine habitat, we also know that what is the meaning of marine, what is the meaning of fresh water. Okay, marine habitat, most of the poriferous animals are found in marine habitat. So this is all about the poriferous animals. Now let's discuss some examples of poriferous animals. So here Euplectella, Cycon and Spongilla. Euplectella, Cycon and Spongilla, all the three organisms are found in the marine habitats and they belong to the poriferous group. Okay, ये तीनों के तीनों organism जो है वो poriferous group को belong करते हैं. So here we have completed the poriferous successfully. Now let's talk about the second phylum, and that is Cnidaria. Cnidaria means the most important, they are more complex than poriferous. ये जो होते हैं ये इनसे ज्यादा complex होते हैं. इनकी जो body design होती है which is more defined, बहुत defined functions में होती है, क्योंकि इनके हिसाब से जो बॉडी फंक्शंस है वो ज्यादा डेवलप्ड होते हैं इसमें. ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस द सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ Cnidaria. जनरली Cnidarians live in a water. ये ज्यादातर वाटर में सर्वाइव करते हैं, which may be fresh water. ये लेकिन मैरीन वाटर में सर्वाइव करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट Cnidarians more body design and differentiation. इनकी जो बॉडी डिजाइन होती है वो काफी एक्सपेंडेड फॉर्म में होती है, काफी ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है. ठीक है, इनके काफी टेंटिकल्स वगैरह निकले होते हैं बॉडी से, जबकि पॉरीफेरस ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को नहीं मिलता है. इफ यू विल सी द बुक ऑफ एनसीईआरटी, द फाइलम ऑफ पॉरीफेरा एंड Cnidaria, यू विल सी द डायग्राम ऑफ Euplectella, Cycon एंड Spongilla. ओके, आप लोग चाहे तो एनसीईआरटी के बुक में प्रेफर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, cavity in the body, most important point. Most of the organisms are generally adapted to their cavity structure, and due to the structure of cavity their body is surrounded by the special type of tissues, and that makes strength and that make protective layer. Okay, so here most important we have discussed 3 points, and fourth point is that body is composed of 2 layers of cells. body जो होती है इनकी 2 layers of cells, मतलब एक cells उसके ऊपर एक और cells. ठीक है, 2 layers of cells से इनकी body जो है मिलकर तैयार होती है. most important 2 layers होती है. And last point is that some of them lives in a colonies while others are solitary, like hydra, jellyfish, sea anemones are the examples of Cnidaria groups. ठीक है, इनकी जो मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म की जो कैटेगरी होती है वो ज्यादातर कॉलोनीज फॉर्म में होती है. कॉलोनीज मतलब गुच्छे में होते हैं, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह ऐसे करके काफी ज्यादा सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं. मोस्टली अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं तो हाइड्रा है, जेलीफिश है और एनामोन्स है ना. जैसे ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ सी एनामोन्स एंड दिस इज द हाइड्रा. ठीक है, और आपके बुक में जेलीफिश का भी होगा, हाइड्रा का है, ये सी एनामोन्स का है. इनके जो है ये जो पार्ट्स होते हैं इसको हम टेंटिकल्स कहते हैं, इस वाले पार्ट्स को और इस वाले पार्ट्स को भी हम टेंटिकल्स कहते हैं. ठीक है, ये मोस्टली यू विल सी इन द हाइड्रा एंड सी एनामोन्स ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कंसीडर्ड इन द ग्रुप ऑफ Cnidaria. ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 phylum of your class. Now next we are going to discuss the Platyhelminthes. Okay, the Platyhelminthes are more complex and more designed function comparison than Cnidaria and Porifera also. Okay, and their cells is made up of 3 types of layer. They are called triploblastic. Most important point, उनकी जो cells की layer है इनमें 2 थी, उनमें 3 पाई जाती है. That's why those organisms are called triploblastic. Okay, we will see in a detailed manner. Okay, now last part we are going to discuss today, and that is Platyhelminthes. Okay, I already told you that Platyhelminthes is the most complex and advanced form of Porifera and Cnidarians groups. Okay, so here we have to discuss that their body is a complexly organized. Complexly organized means most of the Platyhelminthes, the organisms are founded as a मोस्ट डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन. इनकी जो बॉडी डिजाइन होती है वो काफी डिफरेंशिएटेड होती है, एक्सपेंड फॉर्म में होती है, फ्लैटेंड होती है. ठीक है, कंपैरिजन देन पॉरीफेरस एंड Cnidarians. नाउ नेक्स्ट, बायलैटरिकल सिमेट्रिकल. उनकी जो बॉडी होती है दे आर डिवाइडेड इनटू इक्वली हाफ्स पार्ट. ओके, बायलैटरिकल सिमेट्रिकल मींस इनको हम इजीली क्या करते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल्स होती है, बीच में इनके सिमेट्रीज होती है. सिमेट्री भी ऑलरेडी स्टडीड इन मैथ्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट दे हैव मेड अप ऑफ 3 layers of cells. I already told you in previous class that the most of the organisms are founded as 3 layers of cells. First cells, second cell and third cells, and all the cells make the most important and protective layer, and that is called triploblastic. In the most of the time the question asked is that why the Platyhelminthes are called triploblastic animals. Due to the
founding the 3 layers of cells inside their body are called ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होने के कारण, 3 लेयर्स होने के कारण हम प्लेटीहेलमिन्थेस को ट्रिप्लोब्लास्टिक के नाम से जानते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट they don't have true body cavity. In previous video we have studied that cnidarians have true body cavity, but here they don't have true body cavity. इनके पास कैविटी तो होती है बट वो ट्रू फॉर्म में नहीं होती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट their body is flattened called flatworms. इनकी जो बॉडी होती है वो flattened होती है. flattened मतलब चपटे होते हैं, that is called flatworms, जिसको हम flatworms के नाम से भी जानते हैं. आप लोग बहुत पहले भी flatworms के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा. Now next, they are free living organisms. Free living means they are surrounded in all over the area and mostly they are parasites also. Okay, examples की बात करते हैं. The planaria and second liver fluke. Okay, and this is the example of liver fluke and this is planaria. Okay, so here we have completed that the 3 phylums of animals. The first one is that Porifera, second Cnidaria and third is Platyhelminthes. Okay, now next video we will study some more important and different phylums of animals. So before going to end our topic, I am going to give you some homework. Okay, now you have to write down question number first. Write the detailed features of Porifera with examples. Okay, question number second, same address it is and you all have to write down in the place of Porifera you have to write Cnidaria. Okay, you have to write Cnidaria also and same addresses with examples. And question number third is that same but here you can add Platyhelminthes. Okay, with examples also. And most important thing, you all have to make a suitable diagram to represent all the examples. Okay, so most important thing is that the first question is write the detailed features of Porifera with examples and you also have to mention the draw a well leveled diagram of examples. आप लोग को यूप्लेक्टेला का, साइकॉन का और सबके डायग्राम भी बनाना है. Second, write down the detailed features of Cnidaria with examples also and you also have to make a beautiful diagram. And next, write down the features of Platyhelminthes with well leveled diagram. आपको ये डायग्राम भी बना के okay, tomorrow you have to send me the notes in my personal notes. Okay, till then whatever I have taught you, make a fair notes by which all the things will be become easy for you. Okay, thank you students.